morning students, welcome back to your online classes. Well children, I hope you all have enjoyed your summer vacation. This time you all were confined to your home, so I believe you might have utilized your this time in doing something creative. So children, today we will be starting your new chapter, your chapter number 3, that is synthetic fiber and plastic. These are the topics which we will be covering in this video. I hope you will enjoy learning this video. So shall we start our learning? Today we will be learning the following topics: natural and man-made material, clothing material, raw material for making synthetic fiber, characteristic of synthetic fibers, and advantages and disadvantages of using clothes made from synthetic fibers. Natural and man-made materials. What are natural materials? The materials which occur in nature and used as such are called natural materials, and the examples are wood, cotton, coal, graphite, diamond and many minerals of metals and non-metals. नेचुरल मटेरियल्स में वो सारे मटेरियल्स इंक्लूडेड होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं. Man-made materials. The materials obtained from natural materials which we are using as raw materials by chemical processes are called man-made materials. इनके एग्जाम्पल्स हैं प्लास्टिक, पेंट, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, synthetic fibers, etc. They all are known as man-made materials. Children, you know this very well that most of our clothing materials either come from the plants or from animals. For example, cotton and jute, they are plant fibers, whereas wool and silk, they are animal fibers. All these fibers, they are consist of long chains of smaller molecules. The long chain like molecule are called polymers. मीन्स ये जो फाइबर्स हैं ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन से मिलके बने हुए होते हैं और इन लॉन्ग चेन्स को हम क्या बुलाते हैं पॉलीमर्स. सो चिल्ड्रन, लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पॉलीमर्स और इन पॉलीमर्स को बनाने के लिए जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं वी कॉल देम मोनोमर्स. The polymers which occur in nature are called natural polymers. वो सारे polymers जो हमको nature में मिलते हैं we call them natural polymers. And what are the examples? Examples are silk, wool, protein, cellulose, etc. Those polymers which are made in laboratories or in factories from small molecules are called man-made polymers. For example, nylon, polythene, polyvinyl chloride, rayon, and Teflon are some synthetic polymers. Now, raw materials for making synthetic fibers. Well, जितने भी synthetic fibers हैं, they are obtained from small organic molecules or from their suitable compounds. ये जो small organic molecules हैं, we obtain them from petroleum and natural gas. For example, the compounds which are used as raw materials for making synthetic polymers, synthetic fibers, or synthetic plastics are, what are the compounds? They are methane, they are ethanol, ethine, methanol, ethene, butane, and so many. Now, the synthetic fiber. So, the first synthetic fiber we will be learning is rayon. Rayon is also known as artificial silk. Rayon is made from cellulose, which we obtain from wood pulp. Rayon is cheaper than silk. It can be dyed in many colors and can be woven like silk fibers. रेयॉन जो है वो कंपैरेटिवली सिल्क के मुकाबले चीपर होता है. उसे हम अलग अलग कलर्स में इजीली डाई कर सकते हैं और उसे हम इजीली वुवन भी कर सकते हैं. रेयॉन को हम ब्लेंड कर सकते हैं, मीन्स वी कैन मिक्स इट विथ cotton. Now, what are the uses of rayon? It is used in textile industry for making fabrics, in the manufacture of carpets, for the manufacture of tire cord, and for making bandages and surgical dressing. Next synthetic fiber is nylon. It is made from simple chemicals obtained from coal. Nylon is the first fully synthetic fiber. Now, what are the properties of nylon? It is very strong, it is elastic and lustrous, it can be drawn into very thin fibers, it does not absorb water, so it is easy to wash. It is wrinkle free. Nylon is not attacked by fungus. Nylon is insoluble in all solvents. Now, what are the uses of nylon? Nylon we use
इन मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोट्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स रस्सी बनाने के लिए, फिशिंग नेट्स एंड पैराशूट की रोप्स बनाने के लिए, फॉर फैब्रिकेटिंग शीट्स, ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, ब्रशेस के जो ब्रिसल्स होते हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए, साड़ीज, सॉक्स इनको बनाने के लिए, और जो इलास्टिक हॉजरी होती है उसकी मेकिंग में, एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स. Next synthetic fiber is polyester. Terylene, Dacron, Terene are polyester fibers. Polyesters is made from petroleum product. Polyester जो है वो petroleum product से बनता है. It is prepared by the reaction leading to the formation of ester bond between their repeats units. जो units repeat होती है उनके बीच में एक ester bond बन जाता है. उसकी help से polyester बनता है. Now what are the properties of polyester? Polyester जो है they are quite strong. ये जो fiber है ये काफ़ी मजबूत होता है. तो द फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिस्टर लास्ट लॉन्गर, और इससे बने हुए फैब्रिक जो है वो मजबूत होते हैं और काफ़ी टाइम तक चलते हैं. पॉलिस्टर फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर. ये वाटर बहुत कम एब्जॉर्ब करता है. देयरफॉर क्लोथ्स मेड फ्रॉम पॉलिस्टर ड्राई क्विकली आफ्टर वॉशिंग. पॉलिस्टर आर रिंकल रेजिस्टेंट. देयरफॉर द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम पॉलिस्टर रिटेन देयर पीसेस. ये रिंकल फ्री होता है. So what are the uses of polyester? For manufacturing saris, dress materials, for making blends with other fibers. Terylene with cotton gives terry coat, while wool it gives terry wool. For making sail for sailboats, and for making water hoses for the firefighting. The next synthetic fiber is acrylic fiber. It is similar to wool and it is cheaper than wool. So it is used for making sweaters, shawl, blankets and carpets. Now what are the characteristics of synthetic fibers? Well, जो synthetic fibers हैं, they does not get wet. So the fabrics made from synthetic fibers dry up quickly. जो synthetic fibers हैं वो easily गीले नहीं होते हैं. Synthetic fibers are durable. ये durable होते हैं. फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स लास्ट लॉन्ग. इनकी जो लाइफ होती है वो दूसरे फाइबर्स के मुकाबले लॉन्ग होती है. सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी ड्रॉन टू वेरी फाइन थिकनेस. सो दीज आर लाइट वेट. ये हल्के होते हैं, इनका वजन कम होता है. एज अ रिजल्ट द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर थिन एंड हैंस लाइट वेट, एंड दे आर ऑल्सो वेरी चीप. Let's learn the advantages of synthetic fibers. They do not shrink. Synthetic fibers shrink नहीं होते हैं like cotton. They are quick drying and need very little or no ironing. ये बहुत जल्दी dry up हो जाते हैं और इनको ironing या press की requirement as such नहीं होती. That is why they are called wash and wear fabric. इसीलिए इनको popularly क्या बुलाया जाता है? Wash and wear fabric. They last longer as compared the fabrics made from natural fibers. अगर हम इनकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो दे आर लॉन्ग लास्टिंग फैब्रिक. ये दूसरे फैब्रिक के मुकाबले इसकी लाइफ ज़्यादा होती है. Now let's also learn the disadvantages of synthetic fiber. Synthetic fiber do not absorb water or sweat. ये पानी और पसीने को absorb नहीं करते हैं. That's why we cannot wear them in hot and humid weather. Synthetic fibers melt and burn easily. थोड़ी सी हीट मिलने पर ही ये मेल्ट हो सकते हैं और बहुत रैपिडली बर्न कर सकते हैं. सो दे आर नॉट बॉडी फ्रेंडली. अगर वी आर वर्किंग इन अ प्लेस जहाँ पे फायर है तो वी कैनॉट वियर सच क्लोथ्स बिकॉज ये बहुत जल्दी फायर कैच कर सकते हैं. तो किचन में वी शुड अवॉइड वियरिंग सिंथेटिक फाइबर. Synthetic fibers are non-biodegradable. That's what they causes soil pollution. In cold, dry weather, the fabrics made from synthetic fiber tend to develop static electricity. Well, children, you might have observed कि अंधेरे में अगर आपने कभी किसी सिंथेटिक फाइबर को विग्रसली शेक किया होगा तो आपको उसमें से स्पार्क्स निकलते हुए नजर आए होंगे. कोई बेडशीट जैसे आपने कभी जोर से शेक किया हो तो आपने अंधेरे में देखा होगा कि उसमें से क्या होता है, स्पार्क्स आते हैं. ये जो स्पार्क्स होते हैं दे कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम्स टू सर्टेन पीपल. वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. आप इन सारे टॉपिक्स को एक बार प्रॉपर्ली रिवाइज करिएगा. Now, last but not the least, what comes at your social duties, your social responsibilities. So, what you need to do, the most important thing is that you have to maintain social distancing. You have to wash your hands with soap
You need to sanitize your hands on regular basis. Take a healthy diet, drink lots of water, be fit, be safe, and be healthy. Thank you so much.